And that's the same message I give to the Parliament House. Right now, whoever is taking part, especially वो जो बंदे को आपने उठा लिया कोला नेक्स्ट के सीईओ को, you think this is a small matter? You think Muslims are ignorant? My message to my Bengali brothers and sisters is this: unless our youth in Bangladesh, my Muslim sisters and brothers, my parents in Bangladesh who are raising Muslim kids, my Muslim sisters who are raising Muslim kids, and brothers who are raising their children, they better understand that the bigger problem that Bangladesh is suffering from is the same as what Pakistanis are suffering from, is the same as any North African or Arabian Muslim is suffering from. That the delusion that we have is that we are Muslim, we're Islamic countries. We're not Islamic. First, let's call it as a system which is not Islamic. It is the delusion that is corrupting the definitions of Islam. If they had called themselves as non-Islamic or nothing to do with Islam, I would not have had this sort of complaint. My complaint is that you are all calling it an Islamic republic, even though it is exactly the opposite. It is deeply repugnant to the Quran and Sunnah. My kids in Bangladesh, my kids in India, Pakistan, and Arabia, they better understand the definitions of Islam. That is my first plea, because this is the first step towards making the bigger change. Unless we know the meaning of what Islam actually is, we are not going to know the requirements of what Allah Azza wa Jal has put as responsibility upon our shoulders. They have changed the definitions of basics in Islam so successfully that we are living inside Bangladesh or Pakistan as the enemies of Allah Azza wa Jal, even though we live up to the definitions that they created in the name of Islam, and we can successfully call ourselves practicing Muslims. Hasina, Wajid, or whatever that creature's name is, those creatures who are filling up the body of governance. And I'm using very respectful words, even though they might sound derogatory to a lot of people. But the fact that you have committed the most heinous crimes in the name of Islam, I urge my Muslim brothers and sisters in Dhaka and any other city in Bangladesh to come to the real definition, to start saying and writing the real definitions of the words in the Quran. For example, the most basic word is deen. They've changed it into the meaning of religion. Unless my boy and girl of 20, 18, and 24, 25 in Dhaka and Chittagong, they are actually correcting these definitions, they are not going to be able to do anything about it. The delusion is, if it were not in the name of Islam, I would not have had this sort of a reaction. I am proud of my Bengali brothers and sisters who are working towards, and I know many, they're around the world. I have never been to Bangladesh, but I've lived in Canada, I've lived in America. The Bengali brothers have a higher IQ than my Pakistani brothers towards Islam. Something worked with the kind of people who were working in the 60s and 70s. We did not work hard enough in these areas. So I have hope from the Bengali brothers. Just like in Pakistan, I have hope from the Pakhtuns. Pakhtuns never changed the definition. Well, their culture helped them to keep their definition, the archetype of the Muslim man and the Muslim woman, even though I do not wholly agree to their definition of the Muslim woman, but the definition of a Muslim man is far more clear in Pakhtuns. मुझे पख्तून ब्रदर से खुशबू इसलिए आती है, और आप देखेंगे हिस्ट्री उठा के देखें, इस एरिया के सारे बड़े इस्लाम के काम अल्लाह ने पख्तूनों से लिए. So जब आपकी डेफिनेशंस ठीक होती हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट खुद ही क्लियर हो जाती. So
My message to Miss Hasina is very clear, if it ever gets to her, that whatever you did during the time that Burmese Muslims were requiring Islamic help from you, and you turned your back towards them, there will come a day, inshallah, when those Muslim kids are going to stand in front of you in the day of judgment, and they're going to fix your definition of Islam. And at that time, it'll be not just too late, but the price will be 1 billion times more than what you can afford to pay. And that's the same message I give to the Parliament House. Right now, whoever is taking part, especially वो जो बंदे को आपने उठा लिया कोला नेक्स्ट के सीईओ को, you think this is a small matter? You think Muslims are ignorant? कि इस तरह के बंदे को आम से एक मोस्ट परफॉर्मिंग सिटीजन को उठा लेने से क्या मैसेज जाता है यूथ को? आगे डरपोकों के बच्चे हैं सारे पाकिस्तान में, भाना चाहिए इनको डर का। मुझे तो ये भी नहीं पता इसकी रिकवरी किस तरीके से, किस स्ट्रेटजी से की जाएगी। अगर कोई बंदा कौम का सोचता हो और उसका सरबराह हो, तो उसको सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी अपने लोकल सिटीजन की अपलिफ्ट की होती है कि यार इसकी साख्त ना खत्म या खराब हो जाए। आपने तो मोमेंटम तोड़ दिया, पूरे पाकिस्तान का मोमेंटम तोड़ दिया। आपको पता नहीं था कितनी बड़ी, मोर देन 60% डेमोग्राफिक बिजनेस और फाइनेंशियल ड्राइव के अंदर अपने आप को स्टैब्लिश कर, मजबूरन सारे भगना तो भागना चाहते हैं, पाकिस्तान कौन रुकना चाहता है, मगर वो ड्राइव जो थी, साइकोलॉजिकल ड्राइव, अकेली वाहिद ये रह गई थी। आपने उस कम्युनिटी का बंदा उठा के डिटरेंट क्रिएट कर दिए। बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हिल जाएगा आपके, ओ भाई कोई ऐसा काम ना करो जो यहूदियों को नहीं पसंद। सोचें क्या, छोड़े इस्लाम का तो छोड़े ना, आपको नहीं पता, चले पता भी है तो आप नहीं चाहते, अगर नहीं पता तो चले कोई बात नहीं, आपने कहा भी नहीं तो इसलिए मैं आपको नहीं कहता। मगर पाकिस्तान के जो जो भी पॉलिटिकल फ्रेमवर्क नाम ने हाथ था, जो भी फ्रेमवर्क बना हुआ है, उसके अंदर तो ये सबसे बड़े गुनाहों में से आता है। इस्लाम के गुनाह नहीं, वो तो है ही हैं। इस टैक्टिकल एरर, सबसे बड़ा टैक्टिकल एरर आपने कर दिया। इस लेवल के टैक्टिकल एरर के लड़के की वो ड्राइव के ऊपर आपने एक लगा दिए। आपने एक वर्किंग परफॉर्मिंग बिजनेसमैन को उठा के हायर कर दिया, बिकॉज उसका कंपटीशन जो है वो वाली कंपनीज हैं जो कि बिग फाइनेंस, बिग मनी फाइनेंसर्स हैं। पाकिस्तान में तो टका भी नहीं रहता उनका, मगर हमें पता है वो किस तरह का फोर्स और प्रेशर डाल सकती। इट्स अ बिग प्रॉब्लम, बिग बिग प्रॉब्लम। बहरहाल मैं इसको पॉजिटिवली इसलिए देख रहा हूं कि जितनी मुझे कॉलें आई ना मेरे अहबाब की कि सर इस बारे में आप क्या सकते हैं, मैं इसकी पॉजिटिव स्पिन देख रहा हूं कि मुझे चाहिए थी एक ऐसी मेख कि जो इस सिस्टम के अंदर उस लेवल के ऊपर डिटरेंट क्रिएट करेगा। एक लड़का आप सोचे कि भाई अब क्या करे, आपको मतलब जहाज को ऐसे नोज डाइव दे दिया। अब नोज डाइव जरूरी थी, मैं सोच रहा था क्या करेंगे नोज डाइव मिले। खुद मैं तो नहीं कुछ करना था ना, आई एम नॉट अ गाय, आई एम नॉट एन एनार्किस्ट, बट आई लाइक द फैक्ट कि गलत सिस्टम को के अंदर खुद ही ये लोग इस सिस्टम को इनएविटेबल क्रैश की तरफ ले जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने खुद ही कर दिया ना। मैं इधर दोस्ती में शरीक था ना दुश्मनी में शरीक था, मैं तो मुबर्रा था आप लोगों से, मैं तो यूथ को ट्रेन कर रहा था। नाउ आई एम लुकिंग एट इट फ्रॉम अ वेरी एक्यूट एंगल, ओके नाउ यू डिड इट टू योर ओन सेल्फ। अपने ही पैर में खुद कुल्हाड़ी मार के ऐसी मुंह के बल तरहबाजी लगेगी। आई एम होपिंग दिस सिस्टर फ्रॉम बांग्लादेश इज गोइंग टू टेक दैट सेम मैसेज कि आई एम होपिंग उसने भी यही वाला अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी होगी, सिस्टम खुद ही क्रैश कर जाए। अल्लाह ताला के they thought and they plan and Allah plan and Allah is the mightiest of all planners. Allah's plan is the mightiest of all plans. बस ये याद रखिएगा। इत्मीनान से इस्लाम के ऊपर काम जारी रखें, इन लोगों को आपस में अपने अखाड़े में दंगल करने दें। इस्लाम के असूल आपने कभी भी नहीं तोड़ने, और इस्लाम के ऊपर जो फुटिंग है वो स्ट्रांग रखनी है। As soon as you're going to see an opportunity, you are going to capitalize it through your minds, through intellectual warfare and your psychological warfare. मैं आपको बता रहा हूं, मुझे ये खुशाइन लगी है बात, कुछ आए ना, खबर अच्छी नहीं है, मगर मामले के अंदर इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए एक मुस्बत एक सिल्वर लाइनिंग इन दिस। ये अच्छा मुहावरा है अंग्रेजी का, इसमें सिल्वर लाइनिंग है एक मुसलमान में फक्र के लिए कि हाँ जी अब खुद ही इन लोगों ने अपने ऊपर ही अपना कॉन्फिडेंस ही शेक करवा दिया। तो मजबूरन क्या करना पड़ेगा, मजबूरन एक पैरेलल, एक ऐसी ऑप्शन लेके आनी पड़ेगी जहां पे एक आम बंदा
इस डायरेक्ट से बचने के लिए कोई रेफ्यूज तलाश करे, तो इस्लाम से बड़ा क्या रेफ्यूज। फिक्र ना करे, अब मजबूरन इंसाफ मांगना पड़ेगा मुसलमान लड़के को या लड़की को भी। ठीक है, सो इट्स अ देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग इन दिस। आई प्रे फॉर दोज पीपल, दोज दैट फैमिली ऑफ दैट गाय। आई डू नॉट नो ये जो कोला नेक्स्ट के सीईओ उनकी फैमिली ने क्या किया, क्या पेशरफ्त है। आई प्रे फॉर देम एंड आई होप दैट दे रियलाइज कि जिस सिस्टम के प्रचार करते हैं ना ये, जिस पॉलिटिकल सिस्टम के और जिस भी निज़ाम के, अब आपको पता चल गया है कि ये है इनका सिस्टम, ये है इनके तागूत। नजर आ गए तागूत, कौन सा खुदा कहां से, इनका बुत कहां से नंगा होकर सामने आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह अब आपको समझ आ जाएगी, इसी थ्रू सबको समझ आ जाएगी। सो आई होप एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस।